Dear participants, welcome to our third technical session of day 6. The session will be conducted by Mr. Nakul Deshmukh. Let me introduce Mr. Nakul sir. Mr. Nakul Deshmukh is a distinguished senior software trainer and developer currently working as a senior software developer at iBest Technologies. He is the director of iBest Technologies, Amravati. With over a decade of experience in IT industry, Mr. Nakul has cemented his reputation as a leader in technological innovation and education. He has developed more than 500 cutting edge projects and successfully guided over 50 research initiatives, making him a key figure in driving impactful solutions across diverse tech sectors. Mr. Nakul expertise spans a wide range of advanced technologies, including Android development, the Internet of Things, IoT, machine learning, MERN, MEAN, and artificial intelligence. His mastery of these fields not only underscores his technical powers but also highlights his adaptability and forward thinking approach to solving complex challenges. Beyond his technical achievements, Mr. Nakul's influence is a far reaching in the education span. He has personally trained over 1 lakh students, equipping them with the skills and knowledge to succeed in the ever evolving tech industry. His ability to break down intricate concepts and foster hands on learning experience has made him a go to mentor for inspiring developers and IT professionals. Whether developing next gen applications or inspiring the future of tech talent, Mr. Nakul's commitment to excellence and innovation continues to leave a lasting impact on the industry. Welcome, Mr. Nakul Deshpande, to our Atal FDP. Thank you, sir. Now, I request Mr. Nakul Deshpande to share their valuable insights with us. I am going to hand over this session to him. Great. Thanks a lot, ma'am. First of all, I would like to welcome you all for this kind of session organized by the department. It's a good initiative that has been started to get trained with the multiple platforms onto the machine learning as well as deep learning. And the topic allotted to me is to discuss with the diagnosis of the different kinds of disease with the images and symptom analysis based on the some kind of AI based concept like we treat with the AI or just machine learning or data science or deep learning or whatever it may be that we just want to implement. So I would like to make this session as a more interactive. I request to all participants to please answer the questions that I'm going to be asking you while this session so that I can get the good clarity of the topics and we'll get in more interesting way. So we just want to go for the execution of each and everything. If you have a laptop with you, you can execute these things practically with me as well. We're going to be demonstrate or we go for the hands-on execution from ML to DL. If the time will get sufficient for that. And today we'll help you to go for the diagnosis of the any one of the disease. We can just go for the diagnosis of the disease. So how we can deal, how we can work out. Meanwhile, I will just give you the certain task as well that you guys have to work out. You guys have to execute. So basically, today I mostly focus onto the one particular disease that you can go for the n numbers of disease prediction by using the machine learning and deep learning. You might be also seen or you might be heard about the different kinds of platforms that executing onto the machine learning and deep learning. Okay, so we'll explain you the things onto the both. I will explain you onto the machine learning as well as deep learning. Especially our organization, that is iBase, is looking forward for the practical execution in each and every arena. So numbers of students has been deal through the iBase, and they are get a very good future in their career as well. And we are also going for the hands-on execution of each and everything. So you guys are ready? Yes. Please keep me replying. You can unmute, and I don't want to go for the one-way session. I want to go for the two-way session. Yes, guys. Mr. Dheeraj, Pankaj. Yes, everyone. Ms. Priyanka, are you ready? So shall we start? Yes, sir. We are ready. We can Yeah, start the session. fine. So see.
First of all, I would like to go for the execution of simple thing. That is, I will talk about the machine learning. I just want a kind of overview what exactly you know in a machine learning. Today, we'll go for the demonstration of the one project as well that will explain you for the certain kinds of disease prediction. I will go in a generalized way for the execution of these all. So, have you all guys are aware about the machine learning? Yes or no? You can put me in a chat as well. So, what exactly is machine learning? Yes, almost you all are know about this. What exactly this machine learning, how it is just going to be. So, can anyone tell me what exactly the definition of machine learning first? Yes, you can reply me in a chat as well if not possible to talk directly. So, can you please? Yes, anyone? What exactly the machine learning is? Yes, please. Okay. So, machine learning is nothing but the kind of training given to the machine to give the recommendation or prediction or any kind of classification. Okay. And parallelly, I just want to know about the one more entity that is called as deep learning. So, what exactly a deep learning is? क्या होता है deep learning? Yes, anyone? Just want to know what exactly the machine learning and what exactly the deep learning and what are the basic differences among these two. Yes, I request to all participants, please keep me replying so that I comes to know what depth I need to go. Yeah, yes, Mr. Vignesh, you can. Is anyone? What exactly this machine learning and what exactly this deep learning? Yes, please. Because I want to go for the execution of this all and I will looking toward the technical execution of this all. Okay, so we'll go for the practical working. Before of this, I hope you just go for the understanding of the concepts and all. So what exactly a machine learning is and what exactly the deep learning is? Anyone? And what are the difference? You can just tell me about the difference, what exactly the machine learning and what exactly deep learning. Then I will go how it is useful for you in predicting the disease into the clinical industries, okay, in medical industries by image diagnosis and by the symptom diagnosis, how we can diagnose the both entities, how machine will be diagnosis. And currently we are also moving toward the execution of LLM. You might be heard about this, the trending platform that has already started, and generative AI that is again getting to be worked out into this current phenomena, which are also the booming platform for the execution of the are making the decisions into the deep learning and machine learning. So can anyone tell me, yes, please, what exactly the deep learning is? Anyone knows? Yes, please. What is in by deep learning? 52 participant, I think one should answer. Okay, fine. So let me tell you what exactly is machine learning, what exactly is deep learning. Machine learning is nothing but the uh, data set based learning given to the machine on which machine is able or capable to take the three decisions. One, it can give us the prediction. Second होता है आपका recommendation. And third, you comes to know that is a classification. Okay, we have an three entity. One is the recommendation, second is the classification, and third is the prediction. You can have prediction, recommendation, and classification. Okay. When we are talking about deep learning also help you to go for the three kind of outputs. It will also go for the prediction, recommendation, and classification. But what exactly the difference between the deep learning and machine learning? When the machine learning ends, और जैसे कि एक लिमिटेशन है मशीन लर्निंग का, एक पर्टिकुलर अमाउंट के डेटा के बाद, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा के बाद मशीन लर्निंग इसकी एक्यूरेसी ड्रॉप करना शुरू कर देता है. Okay, it have a restriction with the certain amounts of data. It won't go the beyond that data. Okay, so what the phase we have, we are unable to process the huge amount of data at that time. So what we can go in that, we just have to go for the deep learning. जब मशीन लर्निंग एक फेलियर देना शुरू करता है तो हम लोगों को डीप लर्निंग की तरफ मूव होना होता है. सो अब how the basic entities happen into the machine learning and deep learning. In machine learning, we go for the complete training onto the complete data set.
But when we're talking about a deep learning, we can make the batches of the data set, which help us to get a good trainings in that. Okay. One more entity that let me tell you that is booming into the market, that we call it as an what? That we call as LLM. So anyone knows what exactly this LLM? Yes, anyone knows? Currently, we are working onto the artificial intelligence, and it's just going to be built onto certain kinds of concept. Okay, it's called as the large language model, which is a kind of one of the type of artificial intelligence nowadays. Okay, it's a kind of program, we can say it is an AI program which generate and recognize the text. It is used to build on machine learning. Machine learning के थोड़े ऊपर अगर मैं जाना चाहूँ तो I can go for the LLM, and it will also come up with the certain kinds of neural networks model. Okay, दोनों के बीच में मैंने और एक कंसेप्ट बोला है आप लोगों को, LLM. मैं जनरेटिव एआई की तरफ नहीं जाऊंगा. Okay, so LLM is there also, which is moving into the market. Talking about machine learning and deep learning is what, if I want to go for processing of the some kind of images, which quite typical for me to work out into the machine learning, because I have to do the feature extraction of the images. We need to compose the data set on that, and then we have to proceed for its execution. लेकिन जब मैं डीप लर्निंग की बात करूं तो डीप लर्निंग स्टार्ट होगा मशीन लर्निंग के आगे, where we have a huge amount of data, okay, which can't process by the machine learning algorithms. Then we shift it to the deep learning algorithms, where you can use the textual data, you can use the images, you can use the any entity that you want for the execution. So talking about the types of machine learning will be classified into the three types. Yes, anyone knows what are the different types of machine learning? Yes, please. So basically, there are three types of machine learning. We call it as an supervised, unsupervised, and reinforcement learning. And when you are came across the deep learning is totally the concept which is based on the neural network. Okay, we call it as an CNN, we call it as an RNN, we call it as a deep reinforcement learning, we call it as GAN something over there, and MLPs are there. So numbers of concepts are there getting to be worked out for the execution of this. If we're talking about the medical industry, uh, so where it is most probably used into the, and which diagnosis we are getting to be work out in that. So we're just getting to be work out with the certain kinds of execution like drug development. It also used for the disease prediction. It also help for the recognition of the different kinds of categorical disease. It will help us on the image processing base. If we are talking, it will help us to predict the fractures and other entities and their treatment by using the AI. Okay, so these are the different kinds of entities are available about the this machine learning and deep learning over that. Okay, so what the next entity we have to deal, what the next entity we have to execute. So we just talk about what, we just talk about the both machine learning and deep learning. So how we can start with the machine learning? Let me tell you the practically, and we'll show you the practically how you can execute the disease prediction. I will demonstrate you with one of the code, and we'll take the example of the skin disease prediction for this. Okay, I will just going to be demonstrate you how you can train the model, how we can create a model for the skin disease prediction. So basically, when we are talking about the skin disease prediction, this is the most commonly used or developed by the peoples for the different kinds of skin disease. So what we have to do for that, we need the different kinds of data sets for that. Okay, so we'll show you the some kind of works that I am already working on one of the research project. So what the data set I was collected, these are the some kind of images I have which represent the different kinds of disease. तो बात शुरू होती है डेटा सेट कलेक्शन से लेके ऑनवर्ड. ओके, one entity I hope you guys are know, when you came across the deep learning and machine learning, एक entity हमारे लिए बहुत important होती है, that is the data set. Okay, I all participant I will request you to keep me replying so that मैं आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ. बिकॉज अगर मुझे आपसे कुछ रिप्लाई नहीं मिलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि whether you are getting to understand this concept or not. Okay, it's a humble request to all of you. So please try to keep me replying. I don't know what you have a knowledge you are of this about this industry.
और डेटा सेट का आपको बस मशीन लर्निंग का कितना नॉलेज है, ताकि मैं प्रॉपर से आपको ये कंटेंट डिलीवर कर सकूं. सो प्लीज कीप मी पोस्टिंग. सो हैव यू नो व्हाट आर, मैं दोनों तरीके से बोलूंगा. जस्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग as well as deep learning. Okay. As per the topic given to me, I will just work out on the both. एक साइड पे मैं चलूंगा सिम्टम्स पे. यहाँ पे आई जस्ट गोइंग टू यूज द सिम्टम्स. एंड दूसरी साइड पे मैं चलूंगा इमेजेस पे. Okay, both I am going to be explaining. So have you know what are the steps we have to execute in a machine learning? Yes guys, anyone knows what are the steps involved into the machine learning? Please guys, anyone, what is the first step of machine learning? What is the second Now, stage of machine? Yes, yes, please. data pre-processing, Yes, right. and then we will be selecting a model based on the requirement of our task, That's good. Right. and then we have to choose a certain accuracy method or accuracy metric that we want to achieve, and then we have to split the data between training or testing, and based on the requirement, we can also uh, segregate the data into validation dataset also, Right. and lastly, we have to align the result with our evaluation metrics so that we can clearly understand how much we have achieved from this model, or we need to conduct another experiment to achieve such target or achieve such performance. And yeah, That's that's good. That's good. That's good. That's great. Thank you for your kind of response to me. So, uh, data collection, labeling, training. So, let me tell you the genuine step that you can work out. One, you can go for theoretical execution. Second, you can go for practical execution. So, I will tell you the steps upward with the practical executions. So, see what are the steps involved into the machine learning. The first step we have to focus, that is a data collection. Okay, the thing or deal start with the data collection, and I will demonstrate you practically how we can go for the implementation of each and everything till the end. So first step is we have to go for the data collection. Okay. Secondly, what we have to do, once you are collecting the data, you have to perform the data preparation, or we can call it as a data cleaning as well. Okay, converting the data from text to some kind of numbers, doing the replacement of repeated value. Then you may go for the execution of some like changing the data from working with the null values filtration. You may go for working with the outliers. Okay, so n numbers of entity that we can work out when we are talking about its execution. Okay, so data collections, we have to just collect the data. We can collect the data from the different resources. We are going to be talk about that as well. Secondly, when we talk about data cleaning, it just involved a certain kinds of process of the data cleaning. Thirdly, we have to talk about what? Thirdly, we have to talk about determining the dependent and independent variable. Okay, we have to go for determining dependent and independent variable. This plays an important role in any machine learning algorithm. Dependent and independent variable. I will demonstrate you practically how you can do this. Dependent and independent variable, dependent and independent variable. So how we can deal with that, how we can work out with that. So here we just have to understand first what exactly the dependent and what exactly the independent. Fourth step we have to do for splitting the variable into the training and testing. Okay, split the variable into the training and testing. Split in training and testing. Huh. Huh. Training and testing. Fifth is load the model. Just we have to load the model. Okay, and sixth is just give the prediction. Whatever the prediction you want, that may be a recommendation, classification, or anything. Okay, so what exactly and from where we can collect the data? Can you guys tell me what is the resource of data collection? Yes, have you know what are the different resources available from where we can collect? And this information, this data is called as what? Data set we term as.
ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसे डेटा सेट कहते हैं. सो व्हाट आर द resources available for collecting the data? Yes, anyone? कहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? Yes, guys, what are the different resources available for you to collect the information? First one is, you might be heard about the Kaggle, and you guys are aware about this. That is one of the big resource of the data set. एक हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स होता है डेटा सेट का, that most probably the peoples are using it. That is a Kaggle, from where we can get the data in the form of CSV and we can execute it. Okay, ये एक डेटा सेट है दैट इज गेटिंग टू बी एग्जीक्यूट, दैट इज गेटिंग टू बी वर्कआउट. सो ये हम लोग यूज करते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट एंटिटी. हाँ, देन पब्लिक रिपोजिटरी लाइक या Kaggle, UCI, yes, right. So different repositories are available from where we can just download the data. Apart from that, if you want to, let me tell you one thing. If you want to collect the data from the government website, so that is also available. That is publicly released by the government of India. So data.gov.in, it's also the big source of the data set which help you to do your research, the future research. Okay, so what we have to do in that, what we have to execute in that, just here, every department is providing their data. That may be a family health and welfare, that water sanitization, census and surveys, agriculture, education, home affairs, water resources, finance, transport. Every department is providing some data. Okay, you want any data, you can just get into the workout from this government data set, which will be present for the India government of India. So whatever the data you want, attendance of the members of the Lok Sabha 15 winter session as well. So this type of data which will help for the predictions as well. If I talk about the disease diagnosis, so can talk about this now. The new virus was entered into the market, which is again getting to work. Or see, the disease-wise data screening, diagnose and put the treatment as per the national non NCD portal reply to the unstarted questions and all. State-wise numbers of cases of the death report in Zika, the one of the virus that is getting to be introduced. So we can just go for this execution. We just look out, see how much 2017, 2018, 20 in total class, and everything is given, which will help you for the future predictions as well. So you can use this data set for the executions as well. This is a realistic data, okay, and a real-time data that you are getting here that you can use for its execution, that you can work out for its execution. Okay, and if you're talking about you don't have a data set, so is it possible for us to develop our own data set? Yes, guys. Yes, it's very much possible to create our own data set. Yeah, it's possible to create our own data sets as well. Okay, the data set maybe you will be do in the develop in the form of images, or may you can go for the execution of the data set in the form of some kind of textual data as well. Okay, so let me explain you. I just want to deal with the execution of data set. So first of all, what I'm going to do, I'm just going to start with the practical execution of the machine learning. What I am going to be work out, I'm just going to be work out with the one data set, that is a skin data set. I have an here the two data sets. One is a image base which I can use into the uh, deep learning. This is already I was work out on this research for the skin disease prediction. And here these are the different kinds of skin disease that has been collected. So when I don't have a data set, what I did, I just collected this data set from the Google. I just work out with the certain diseases, collected certain images from the Google, but I just perform some resizing and other things onto this one, so that this image is getting to be worked out properly. We can't load them directly into our machine learning algorithm or deep learning algorithm. We have to work out. So I just collected a certain information about the cirrhosis, about the skin rashes, about the melasma, about the eczema, about the acne. So these are the different kinds of diseases that we have to work on. And I have one data set as well, which contain the certain kinds of skin disease as well, which will just give us the simple entity like whether the particular candidate itching have, whether the nodal skin have, the restlessness is there, sweating is there, yellowish skins are there, redness or look out into the eyes. So these are the different kinds of symptoms I have collected, and within that, here the last column is given, which will just tell me what kind of disease that particular candidate have. Okay, so how we can deal with this, how we can work out with this, what are the line of code we have to write down.
So steps will be start from the first entity, that is the data set collection. As I told you, as also you know, that you can collect the data from the different resources. Like you may go for the Kaggle, you may go for the this Amazon datasets are also there. Google datasets are also there. You can go for the research datasets as well. Your SQL libraries are also providing a certain kinds of inbuilt datasets, and you may try for the government datasets as well. Okay. So how I can execute these things practically, as I told you, what are the ways we are going to be deal with that? What are the ways we are going to be execute with that? How we can work out, how we can execute, let me tell you. So if you want to build up or start with the kind of machine learning, I want to do the prediction of the machine learning. First of all, what we have to do here, I have already done with this project. So I will going for the separate execution of this. So how we can deal with this execution, how we can work out with this execution, let me tell you. So here we have to deal with a simple entity. First of all, I am just going to create a new file. I'm going to write down the line of code in a core Python, not using any kind of big IDE, or not using the Google Colab, or not using the any kind of Anaconda Navigator, Spider, Jupyter, nothing. It's possible for me to execute the same code into the Anaconda Navigator, but apart from that, what I will try to take a new file and just executing on this. So what we have to start? The step one, we have to load this data set. So I do one thing, I make the one new folder where I can keep my data set, and where I can execute this all. New folder, let's say project work. You can parallelly execute with me. I do one thing, I will share this CSV file with you guys so that you can try to execute me parallel. It's better to be go on hands-on execution, so you will get the real knowledge of this, and you comes to know how we can execute, and you also get the confidence to be building of the one ML based algorithmic executions as well. So datasets, yeah, I have this key dataset. I'm just going to put this dataset in a new folder and just start with the certain kinds of ideally code. So can anyone tell me how I can load this dataset first? What we need to work out for that? What is the line to write down for loading the dataset? Yes, anyone, please? Can anyone tell me? Yes. How we can load the dataset? Which function is used in Python to load the dataset? Because जब तक मैं machine learning को पहले clear नहीं कर दूँ, तो it's quite typical for me to go for these deep learning. Okay. So can anyone tell me? Use a load function. Yes. Good. और इसके अलावा exactly load txt file, it is used if we have an kind of the text file, but I have an csv file. I have an csv file. If you check the extension of this file, I have an csv file. So how I can load the dataset? What is the line of code, or which library used to load the dataset? Yes, can anyone? No, load is not going to be used. Is anything else apart from this So for I think example? pandas dot load Yes, CSV. going good. Yes, pandas library is used for that. So let me explain you practically how you guys can go on this. Okay, you can execute me practically with me as well. So if you don't have an that library, how we can install you? How we can install it? Let me tell you about that. So you have to search here CMD. Just right click, run as administrator. Click on yes. So what you have to do? You have to open this into the command prompt. Okay, आप लोगों को पहले कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव मोड से ओपन करना है. यू हैव टू ओपन दैट वन. और आपको बीच में अगर कुछ क्वेश्चन जाता है, कुछ इशू जाता है, तो फ्री टू आस्क. इफ यू आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद द पाइथन आइडियली, यू कैन प्रोसीड विद दिस एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकली. ओके, एंड यू कैन वर्क आउट. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, व्हाट यू हैव टू एग्जीक्यूट इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट डाउन pip इंस्टॉल pandas. अगर ये चीज आप एनाकोंडा नेविगेटर के कोई भी आईडी के थ्रू कर रहे हैं, so you no need to worry about that. It's already installed over there. Okay, I have also Anaconda Navigator. I can use a Spider or Jupyter or anything that I want. But जब भी हम लोग इसे वर्कआउट करें तो हमें ऐसी कुछ नीड नहीं होती है. You can get it directly. That pip install the pandas we can write down like this one. Okay, so I'm already satisfied with the requirement.
Now, how I can load this data set? Let me tell you the way. First of all, I am going to be use import pandas as a PD. I'm just going to be loaded into the data frame. How I can load into the data frame? Df is equals to pd dot read underscore csv. Okay, I have to write down simple line of code. I'm going to be save this code in Hello, a sir. same folder. Yeah, yes, yes. Can we get the CSV file? Yeah, sure. I will share in a group. Just give me the minute. I'm just going to be save this code in my folder that I have newly created. So let's say project one, and we'll save here. Let's say execution underscore ml. Just save it. Okay. Let me share the file in a group first. And share your file in a group so that you guys also start with this execution. Yeah. So what it does contain basically, it does contain the simple entity that is a simple kind of symptoms. Okay. So you can raise the symptoms as well, and you can raise the other things like talking about uh, the other things we can say like that disease as well. So you can modify that one if, as per your requirement. So how I can load this one, how I can work out. So I'm getting here execution underscore ml.py. I just want to pass the path. You need to pass the path here and just have to pass the in a single quotes. Okay. I'm just using the at the place of forward slash. I am using here backward slash. Okay, the complete path I am going to pass here of the data set. And what is the name of my data set? That I use the scheme. So I write down here what skin scheme dot csv. Okay, that I did. Then I want to print it. How we can print the data frame? You can just print the data frame. What is meant by data frame? It's a two-dimensional data structure given into the Python, which helps to store data in the form of rows and columns. अगर आप लोगों को data rows and columns में store करना है, तो उसके लिए हम लोग data frame को use करते हैं. There are the different kinds of data structure given into Python apart from this as well. Basically, I'm focusing on the execution of this the simple way, that is df. Now, what I want to do, what I want to execute, I just want to go for the next entity. I want to check whether it is everything okay or not, whether it is loaded or not. So if I run it, let's see what it will be do, what it will be execute. मेरे लिए इसमें एक चैलेंज होगा कि मुझे जो क्लास है, जो प्रेडिक्ट करने वाला क्लास है, मैं आई हैव टू गो फॉर द अप्लाइंग द वन हॉट एनकोडर ऑन दैट. ओके, वो भी एक हो सकता है और माइट बी समवॉट डिफरेंट. यहाँ पे देखिए आई गेटिंग द स्क्वीज लाइन लाइक दिस. जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो टोटली पूरा का पूरा डेटा सेट यहाँ पे कवर अप हो जाता है. Okay, the whole data set is going to be cover up here and getting to be printed out over here. So that the way we can deal, that the way we can execute. Am I clear, guys? Can you do it? I just shared the things in a group. Please try to do it. We'll tell you how we can implement the single machine learning algorithm. In बीच में मैं थोड़ा सा machine learning के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि what you have to do in that. Okay. So tell me. Execute it. Just try it. Just Sir, load. we haven't got the data set, sorry. I load put in a group. Oh, okay. Ma'am, can you please share? I just put. I think this. I put in a that our group. Yes, sir. Yeah. You Please do share with this. WhatsApp me. Yeah, I shared on a WhatsApp group. Yes, sir. Please share with this all people. May you have Dot an. CSV file. Yeah, right. Share that one. 1 second, sir. Yeah. Sure. So I have shared the file in WhatsApp group of participants. Okay. So guys got it now. What exactly you have to do? Yes, sir, got it. Got it. Okay. So just try it first. Just try to load. If you are getting the any problem over there or any issue, you can just tell me what exactly the issue you have. We'll help you to sort it out. If anything, the issue came into the installation of pandas. Okay, that's great. You can just try, guys.
What we are doing, we are just working with a simple entity, that is loading a data set first. Then we are going to be talk about the what exactly the way we just have to execute. से कैसे आज हम मैं तो आप लोगों से एक तो भी मिनिमम एल्गोरिथम मशीन लर्निंग का एग्जीक्यूट करवा लूंगा, बट यू गाइस हैव टू ट्राई टू दिस विथ मी एज वेल. अगर आप ट्राई करेंगे तो आई डेफिनेटली विल हेल्प यू फॉर दैट. ये आप लोगों को आगे इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा टू गेट द मोर एंड मोर एंटिटी. जस्ट नीड टू क्लीन द डेटा सेट. यू कैन एग्जीक्यूट इट ऑन एनीथिंग, एनी डेटा सेट, राइट? लेट नो वंस इट इज डन. जस्ट हैव टू लोड द डेटा सेट. डेटा सेट को आप लोगों को डाउनलोड करना है and then want to know for the next execution. Yes, sir. It's done. Got it? Okay. So Yeah. what the next I want to do? Just now I want to determine the dependent and independent variable over here. Okay. I just want to determine the dependent and independent variable over here. So how we can determine the dependent and independent variable? Okay. हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे निकालेंगे? What are the ways we can deal with that? What are the ways we can execute with that? So let me tell you how we can execute, how we can work out. Okay. So सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. What is my dependent variable? Can you tell me? Yes. What is my dependent variable? Yes, anyone knows? Sir, the value we need to predict is our dependent variable. Uh, one variable dependent on another variable is called as dependent variable. Anything else apart from this? What do you know? Exactly. Dependent means what? In machine learning, it very important to understand what exactly the dependent variable and independent variable. You might be seen the n numbers of machine learning algorithm, and within that you comes to know there will be the x and y. वहाँ पे x और y आप लोगों को ये देखा होगा. फिर और एक चीज होती है x underscore y, sorry x underscore train, y underscore train, right? This also available. So what exactly that? उसका exact meaning क्या होता है? How it is going to be deal? How it is going to be executed? So let me explain you what exactly mean by dependent variable and what exactly mean by independent variable. थोड़ा ध्यान दीजिए. देखिए, when the value of any variable is dependent on any other variable, not exactly like that. ये ऐसा नहीं होता है. देखिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की जब भी आप एग्जीक्यूशन करें या डीप लर्निंग एल्गोरिदम का जब भी आपको एग्जीक्यूशन करना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है आपका फीचर, ओके, एंड सेकंड इज your target. Okay, one is your feature and second is your target. So what exactly mean by feature and what exactly mean by target? दोनों में difference क्या होता है? How the things are going to be work out, how the things are going to be execute. दोनों में basically difference क्या होता है? So difference is that कि जब हम लोग बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स यानी जिसके बेसिस पे आपको प्रेडिक्ट करना होता है, एंड टारगेट्स यानी क्यों आपको प्रेडिक्ट करना होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ एंटिटी. फीचर्स मीन्स जिसके बेसिस पे मुझे प्रेडिक्ट करना है, एंड टारगेट मीन्स जो मुझे प्रेडिक्ट करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा सेट ओवर हियर, सो as I'm taken where my project, yeah, data set I'm taken. So what exactly here? This is my targeted variable.
आई वॉन्ट टू प्रेडिक्ट दिस वन। तो जो मुझे प्रेडिक्ट करना है वो मेरे लिए होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो मुझे प्रेडिक्ट करना है वो मेरे लिए है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके बेसिस पे मुझे प्रेडिक्ट करना है वो हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें चीजें अलग अलग है। लेट्स से मैं एक सिम्टम के बेसिस पे भी डिसीज को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं 2 सिम्टम के बेसिस पे भी डिसीज को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं 10 सिम्टम के बेसिस पे भी डिसीज को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट टू प्रेडिक्ट माई डिसीज ऑन 10 सिम्टम्स, देन व्हाट द 10, जितने भी ये 10 कॉलम होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। क्योंकि मुझे प्रेडिक्ट किस पे करना है, मुझे प्रेडिक्ट करना है ये सभी कॉलम पे, लेकिन प्रेडिक्ट क्या करना है, तो ये कॉलम प्रेडिक्ट करना है। सो व्हाट आई कॉल्ड इट एज एन अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। जो प्रेडिक्ट करना है वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मे बी अ डिसीज प्रेडिक्शन, दैट मे बी अ रेनफॉल प्रेडिक्शन, दैट मे बी अ प्रेडिक्शन ऑफ एनीथिंग। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो आपको प्रिडिक्ट करना है वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके बेसिस पे आपको प्रिडिक्ट करना है वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? सो दिस ऑल कॉलम्स कैन बी a x because I call it as an what? Independent variable. And this column is only y because I call it as a dependent variable. Sorry, हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल। these all are independent. इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये मेरे प्रिडिक्शन के कॉलम्स नहीं है। प्रिडिक्शन का कॉलम मेरा ये है, तो मुझे ये इस पे फोकस करना है। ओके, सो हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दीज आर कॉल्ड एज एक्सेल बेस। आपको जब भी मशीन लर्निंग की बात करेंगे हम लोग, तो आपको मशीन लर्निंग में एक्स मिलेगा और वाई मिलेगा व्हेन यू आर चेकिंग ऑन टू द प्रोग्राम फ्रॉम द गूगल और एनीवेयर। तो इन दैट केस दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्स, जिसके बेसिस पे हम लोगों को चीजों को प्रिडिक्ट करना है वो होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो प्रिडिक्ट करना है वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हाउ वी कैन डील दैट वन। नाउ मैं इसे स्प्लिट कैसे करूंगा, कि डेटा सेट से मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे सेपरेट करूंगा। तो देखिए, हियर यू हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट लाइन which is important to split the data set. So what I can write down, ex is equals to df dot ilog. So just pass here df dot ilog. इसमें हम लोगों को 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। We have to pass the 2 parameter in this. One parameter which will represent the rows and second parameter which will represent the columns. Okay. एक पैरामीटर होता है जो होता है रोज के बारे में, और दूसरा पैरामीटर होता है जो कि कॉलम्स के बारे में। तो इफ आई वांट टू टेक ओनली 10 to 15 rows only, or let's say 10 rows, how I can write down? I just start 0 colon 10, and I want to take only the single column, this one, so I can write down here 0 colon 1. And if I call it for the execution, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट करूँ x को, तो what exactly I am getting here? I just commenting this one, okay, and just run it. तो we just getting C, इचिंग मिला है मुझे। इचिंग क्यों मिला है? क्योंकि मैंने इसी कॉलम की 10 रोज सिलेक्ट की थी, और 0 colon 1 मतलब इसका जो नंबर है कॉलम का, दैट विल बी अ 0। ओके, सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डील। मैंने अकाउंट नेविगेटर इज नॉट इंस्टॉल्ड इन मशीन। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो हम लोग को मिल रहा है 0 colon 10 का मतलब हो गया कि यू आर टेकन द 10 रोज इन दैट, एंड 0 colon 1 का मतलब हो गया कि यू आर टेकन द फर्स्ट कॉलम, 0th कॉलम। 0 colon 1 का मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग दोनों कॉलम वर्कआउट करें। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Here, have you clear what exactly this 0 colon 10 and 0 colon 1? Yes, please. How we Sir. can, okay ना? तो बेसिकली ये जो चीज होती है when we are dealing with this execution, तो डेटा सेट को हमेशा आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे अगर चाहिए ऑल रोज, क्योंकि देखिए डेटा सेट में एक इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू कवर द ऑल रोज ऑफ अवर डेटा सेट, सो आई कैन राइट डाउन थिंग्स लाइक दिस। ओके, I just write down like this one. So what I can do, I just run it. So exact output we are getting like this one.
ओके, तो मुझे जीरो से अब अगर मैं इससे रन, सॉरी, जस्ट लैब द कोड, अगर मैं इससे रन करूँ तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग हियर, व्हाट द थिंग वी कैन वर्कआउट हियर। तो यहाँ पे हम लोगों को वर्कआउट करते समय एक चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे अगर कंप्लीट रो चाहिए तो आई विल पास द कोलन स्क्वीज लाइन, सो इट विल प्रिंट ऑल 51 लाइन। ओके, व्हाट वी हैव टू पास एग्जैक्टली, वी हैव टू पास द कोलन, कोलन मींस ऑल रोज। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इचिंग के भरोसे नहीं, बाकी कुछ सिम्टम्स भी इनपुट लो, आई वांट टू टेक द नोडल स्किन इरप्शन, like restlessness, like sweating, okay, yellowish, all things I want to take. So 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so what I can write down here? So 4 I can write down. So exactly what we are getting, just getting the 4 columns over there. Then see, यहाँ पे अगर मैं workout करूँ, so let me close it, run it again, so that it is visible properly. So you can just get the entities like this one. Okay, मुझे सभी रोज मिली है, उसमें पहला कॉलम भी मिला है, दूसरा कॉलम भी मिला है, तीसरा कॉलम भी मिला है, एंड चौथा कॉलम भी मिला है. So what I call this one, selecting the dependent and independent variable from the given CSV file. और CSV का मतलब क्या होता है? Is anyone knows? आप लोगों ने जो टेक्स्ट फाइल लोड की थी, that also can be treated as an CSV file. CSV का मतलब होता है comma separated value. Okay, CSV का मतलब होता है comma separated. Comma separated one. Yeah. Yeah. So it is used basically फॉर दी मेंटेनिंग द ऑल रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली. और डेटा सेट की जब हम लोग बात करते हैं, सो वी आर जस्ट गेटिंग द डेटा सेट इन द फॉर्म मोस्टली इन अ सीएसवी फॉर्म. जितने भी पोर्टल्स होते हैं विल प्रोवाइड द डेटा सेट इन अ सीएसवी फॉर्म. ओके, सो डू वन थिंग, राइट नाउ, कीजिए इसे वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट, जस्ट स्प्लिट इट, जस्ट. Sir, do we need the zeroth column where the serial numbers are mentioned? Yes, serial numbers are always start. First column will be treated as in zeroth number column. Okay, so it's up to you. You wish to take these symptoms for the consideration. It's okay. If you But want. Mhm. yes, but for the x variable, the values are showing like first column is 0 to the count is showing. I think it's just showing how many rows are there, right? In the outcome. No, first it just showing you the rows. This is not Okay, okay, meaningful for us in consideration. okay, 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 it's just printing the index of the record. We can say like that. okay, okay, okay. I thought it's another column in the No, no, outcome. no. It's not another column. Okay, It's just a kind of okay, index. We're using the data frame. Data frame we always getting in the form of rows and column. So if we not okay. mention any name over there, it will just going to be work out by or start with the zero index. Execute fast. Nakul sir, you are unmute. Nakul sir, Nakul sir, your voice is not audible.
Yeah, anyone have an issue in execution? Yes, guys. So anyone have an issue? Have you got the output till right now? Please reply. Am I audible? Yes or no? Yes, sir, you are audible. And Okay. yeah, I have executed. Yeah. Okay. So done. Got it. I base. So have you done, guys? Shall we proceed? आगे बढ़े. We just got the idea that how we can split the data set into the x and y. So what exactly this x? What exactly this y? So x is basically a independent variable and y is what? A dependent variable. Make it fast. Just waiting for your responses, whether you are done with this or not. Chalo. Let me show you what exactly we can do the next. What exactly we just want to deal with the next. क्या करना है हम लोग को देख ध्यान दीजिए. ये मैंने x लिया है. Y is equals to मैं लिखता हूँ df dot I log. I want to split into the for want a dependent variable. That what I am expecting. I am just expecting the last column. So if we want that column, we need to count how much columns are there. Or either you can write down here -1. I hope it will get it. Else we try with another technique as well. So let's see. Yeah, I'm getting this one. So what it means exactly the -1. -1 आपके नेगेटिव इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो जब भी उसमें कुछ लास्ट कॉलम होगा, just getting that one at the end. Okay, we are just getting here. If you write down -1. Now what I want to do, I want to split the data set into the training and testing. Okay, we just want to split a data set into the training and testing. So anyone knows how we can split the data set into the training and testing? What are the ways? Yes, guys. क्या तरीका है डेटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करने का? क्या तरीका है? विच मेथड वी हैव टू यूज, हाउ वी कैन डील. सी मैं टोटली प्रोग्रामेटिकली बात करूंगा. I would not go for the theoretical, any kind of single point of theoretical concept, because it's better to execute the things on practically. Okay, so anyone can tell me, yes guys, how we can split this one into the training and testing? We are looking toward the real-time execution of this machine learning with a certain kinds of data set, which will help us to go for this one. And I think all are suitable for the programming, right? Huh? So anyone knows? So using the train test split. Yes, using a train underscore test underscore split. What it exactly? It's just the kind of function. ये क्या होता है? तो ये एक function होता है. ये deal करता है with the execution of simple entity, that is splitting the data set into the training and testing. And here it will help us to know how much data set we want for testing and how much data set we want to keep for training. ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को कितना डेटा सेट रखना है और टेस्टिंग के लिए हम लोगों को कितना डेटा सेट रखना है, ये लाइन डिफाइन करता है. So if I don't know about it exactly how to use the function, how to call the libraries, how to work out what the things I need to exactly install, just if you go on Google and search there, split dataset into the training and testing, then let me show you the code is available over there. Okay, so what the code we are getting? So we are just getting the simple code over there. If you just look out for this one, we are just getting this one. So we can just use this one.
लाइक sklearn model underscore selection, import train underscore test underscore split. मैं आपको कोड को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आप लोग को, आपने सिर्फ इतना भी ध्यान में रखा कि train underscore test underscore split नाम का कुछ तो भी होता है which will help us to split the data set into the training and testing. Okay, जो हम लोगों को हेल्प करेगा to split the data set into the training and testing. तो यहाँ पे मैंने सिंपली उसे वर्कआउट किया है. सो व्हाट आर द वेज आई कैन स्प्लिट द डेटा सेट. डेटा सेट का स्प्लिट करने का तरीका थोड़ा आप समझ लीजिए कि एग्जैक्टली क्या होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर जस्ट यूजिंग इट बट एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट हैपन इनटू द बैकग्राउंड व्हेन वी आर कॉलिंग दिस फॉर द एग्जीक्यूशन. जब हम लोग इसके टेक्निकल एग्जीक्यूशन के लिए कॉल करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली दिस एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, व्हाट एग्जैक्टली दिस वाई अंडरस्कोर ट्रेन, व्हाट एग्जैक्टली दिस x y underscore test, x underscore test. So we just want to know about that first. उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सर्च करना है, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा वर्कआउट करना है. So what exactly, just how to do, what exactly we just how to execute, let me tell you about this. So यहाँ पे अगर हम लोग को इसे वर्कआउट करना है तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी टेल यू. अगेन सेम लाइन मैंने इंपोर्ट की है एंड जस्ट फंक्शन इज x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test is equal to train underscore test underscore split. So what exactly, what we are getting, x underscore train मैं लिख रहा हूँ, comma x underscore test भी मैं लिख रहा हूँ. Then I want to go for y underscore train and write down here y underscore test is equals to train underscore test underscore split, split, split. Okay, in bracket you have to pass x comma y comma we have to write down test underscore size over there. So what exactly this test underscore size, test underscore size का मतलब क्या है, ये किस तरीके से वर्कआउट होती है, इसका मीनिंग क्या होता है. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन. टेस्ट अंडरस्कोर साइज आपके टेस्टिंग डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो व्हाट इट एग्जैक्टली, इसका मतलब होता है कि आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ओके, आप जो डेटा सेट यूज कर रहे हैं, आपके पास 100 रिकॉर्ड है, 200 रिकॉर्ड है, 300 रिकॉर्ड है, 3000 रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड है, तो उसमें से आप लोग कितना परसेंट डेटा सेट टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहते हैं. Going to go for the 20% of data set. So yes, we can talk about 20%. तो 20% का मीनिंग क्या है? If you have an 1000 records over there, अगर आप लोगों के पास 1000 records है, तो 1000 records में से 200 record will keep for the testing. Okay, will keep 200 record for the testing. मैं 200 record testing के लिए रखूंगा. जब मैं बात करूंगा about test underscore size की, we can write down here train underscore size as well. यहाँ पे मैं ट्रेन अंडरस्कोर साइज को भी लिख सकता हूँ. सो दैट वी जस्ट वांट टू डू, दैट वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है अभी, एज आई राइट डाउन x कॉमा y टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 0.2. व्हाट इज दिस x अंडरस्कोर ट्रेन, व्हाट इज दिस x अंडरस्कोर टेस्ट, व्हाट इज दिस x. पहले तो मैं इसे रन करके देखता हूँ, विल इट एग्जीक्यूट और विल इट कॉज द एनी एरर, क्योंकि मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है. सो जस्ट वांट टू चेक इट आउट कि whether it will execute or not. So everything is fine. Or let's wait. Execution is going on. Any print statement I have? Yes, I have a print statement. So wait. Will it split or will it cause the error? Yeah, it's executed properly. No issues about that. अब देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो आई एम टेकन ओनली 0 1 2 3. 4 कॉलम मैंने इंडिपेंडेंट लिए हैं. आपको 5 लेना है आप 5 ले सकते हैं, आपको 10 लेना है 10 ले सकते हैं, आपको 20 लेना है आपको 20 ले सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ मच पैरामीटर यू वांट टू execute. Okay, so what exactly we want to deal next. ये हो गया मेरा x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test, and just executing this entity like this one. इसे मैंने इस तरीके से execute किया. So my data is going to be split into the training and testing. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया exactly? What it means? Okay, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या तरीका है इसे एग्जीक्यूट करने का, क्या तरीका है इसे वर्कआउट करने का. सो लेट मी एक्सप्लेन यू इसका मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, व्हाट इज एक्स अंडरस्कोर टेस्ट. थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जितने भी मैंने कॉलम्स लिए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम्स आई एम टेकन, दिस ऑल विल बी टेकन एज एन फॉर द ट्रेनिंग, जिसे मैं येलो कलर दे रहा हूँ. ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा ट्रेनिंग.
ओके, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पूरा हो गया है मेरा x, दिस इज कंप्लीट माय x एंड दिस इज कंप्लीटली माय y। ओके, ये कंप्लीट x है, ये कंप्लीट y है। तो व्हाट इट मीन बाय x अंडरस्कोर ट्रेन, समझ लीजिए इसमें से x अंडरस्कोर ट्रेन कितने वेरिएबल्स है और x अंडरस्कोर ट्रेन कौन से वेरिएबल्स रहेंगे इन फ्यूचर इफ यू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डेटा सेट, व्हाट एग्जैक्टली द variables we have to take, what exactly the variables we have to go। तो यहाँ पे मुझे ये जितने भी वेरिएबल्स मिलेंगे दैट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन हम लोगों को मिलेंगे, इसमें से एक्स अंडरस्कोर ट्रेन यानी क्या। देखिए जैसे मैंने बोला कि सपोज आई हैव एन समथिंग काइंड ऑफ 50 रिकॉर्ड, सो अमंग 50 जितना भी 80% होगा यहाँ तक, ये चला गया आपके किसके लिए, ये चला गया आपके ट्रेनिंग के लिए। तो व्हाट दिस ब्लू पोर्शन आई वाज शो यू, दिस विल बी कम्स अंडर व्हाट, दिस विल बी कम्स अंडर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और ये जो बचता है वो हो गया आपका एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, यानी इतना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रेगुलर एग्जांपल दूं, तो हमारे घर पे जब भी मेहमान आते हैं, व्हेन अवर मदर और एनीवन प्रिपेयर एनी डिश फॉर दैट, या फिर आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, तो वहां पे स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज इट, माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, लेट मी रीशेयर। गाइस स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल मेरे पास, जस्ट अ मिनट, टेक इट प्रॉपर्ली, इज इट विजिबल, screen is visible, those which is not visible, please check your connectivity, please check your connectivity, okay, or rejoin the meeting। So basically yeah, so it's what the next thing we have to do, what the next thing we have to execute। तो देखिए मैं बात कर रहा था एक्सटेंडर्स को ट्रेन की और एक्सटेंडर्स को टेस्ट की। सो बेसिकली व्हाट इज दिस एक्सटेंडर्स को ट्रेन, एक्सटेंडर्स को टेस्ट, वाई अंडर्स को ट्रेन, वाई अंडर्स को टेस्ट, ये क्या है बेसिकली और ये कैसे काम करता है। सो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने वर्कआउट किया था, एक्सटेंडर्स को ट्रेन, एक्सटेंडर्स को टेस्ट, सो व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, ये जो हम लोगों ने डेटा सेट लिया है, इसमें से ये जो मैं आपको येलो पैच दिखा रहा हूँ, the lines which are covered with the yellow and columns with the cover with the yellow, these all are nothing but uh, these all are nothing but the x variables, independent variables, okay। और जो मैंने यहाँ पे आपको दूसरे पैच में दिखाया है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज ग्रीन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें से जो 80% रिकॉर्ड होंगे, इसमें से जो 80% रिकॉर्ड होंगे दैट विल बी कीप इट फॉर दी एग्जीक्यूशन ऑफ, ये जितने भी रिकॉर्ड्स है ना ये रखे जाएंगे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ, और वी कॉल इट एज एन व्हाट, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ये रखे जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। आई वाज गिवन यू द वन एग्जांपल, जैसे आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो आपकी अगर कुछ डिश ऑर्डर होती है, तो पहले क्या होता है, वो जो डिश ऑर्डर होती है, वो जो डिश बनाता है वेटर, तो वो वेटर उसमें से थोड़ा बहुत कंटेंट पहले टेस्ट कर लेता है, पूरा कंटेंट टेस्ट नहीं करता। हमारे यहाँ पे जब कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आते हैं तो अवर मदर इज कुकिंग सम डिशेस फॉर देम, so she will test a bit part of that dish first, okay। वो पूरी डिश टेस्ट नहीं होती, उसमें से छोटा सा पार्ट टेस्ट होता है। सेम चीज यहाँ पे डील हो रही है, सेम चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डील ओवर देयर, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू वर्क आउट ओवर देयर। तो यहाँ पे मैं 20% पार्ट को टेस्टिंग के लिए रखूंगा एंड 80% पार्ट को ट्रेनिंग के लिए रखूंगा। यानी मैंने जो एक्स लिया है, यहाँ पे जो एक्स लिया है, ये टोटली मेरा 20% रिकॉर्ड एक्सटेंडर्स को टेस्ट हो गया, और रिमेनिंग जो रिकॉर्ड्स मेरे बचे हैं, सॉरी 80% रिकॉर्ड एक्सटेंडर्स को ट्रेन हो गया, और रिमेनिंग जो बचे हैं वो एक्सटेंडर्स को टेस्ट हो गया। सेम चीज जब मैं वाई की करूंगा, तो व्हाट एग्जैक्टली ओवर देयर, इसमें से ये जो मेरा कंप्लीट वाई है, इसमें से ये जो रिकॉर्ड्स हैं, दिस मच ऑफ रिकॉर्ड्स, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ व्हाट,
दिस विल बी ट्रीटेड एज अ अगेन एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, क्योंकि वाई क्या है हमारा, टेस्ट है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, और रिमेनिंग जितने भी रिकॉर्ड होंगे, सॉरी वाई अंडरस्कोर ट्रेन, और रिमेनिंग जितने भी रिकॉर्ड होंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज एन वाई अंडरस्कोर टेस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? What exactly or how the data set is going to be work out for x underscore train and y underscore train, x underscore test and y underscore test. आपका जो टोटल x है, जो भी आपका x है, तो ये जो x हमारा होता है उसमें से जो 80% रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे वो रहेंगे ट्रेनिंग के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, x अंडरस्कोर ट्रेन का मतलब क्या हो गया, उसमें से x में से 80% रिकॉर्ड, x अंडरस्कोर टेस्ट का मतलब उसमें से 20% रिकॉर्ड. और ऐसा नहीं है कि ये सभी के सभी सिक्वेंशियली आपको मिलेंगे, ओके, ये रैंडमली भी सिलेक्ट हो सकते हैं. दीज आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज वेल, ये रैंडमली भी सिलेक्ट हो सकते हैं. दैट इज एन एंटिटी गेटिंग टू बी वर्कआउट, दैट इज एन एंटिटी गेटिंग टू बी एग्जीक्यूट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स एग्जीक्यूशन. ओके, वाई अंडरस्कोर ट्रेन की भी सेम चीज है, वाई अंडरस्कोर वाई भी उसी तरीके से वर्कआउट होता है, वाई भी उसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है. एम आई क्लियर गाइस? क्लियर ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे स्प्लिट किया, इस तरीके से हम लोगों ने उसे वर्कआउट किया. नाउ एवरीथिंग इज फाइन. Now what I want to do, I want to apply the machine learning algorithm on this. Okay, so what type of machine learning algorithm I can apply? Whether I apply the regression kind of algorithm, whether I can apply the classification kind of algorithm. So what exactly I need to apply? तो सबसे पहले what are the different types of machine learning? Can anyone tell me? Yes, 3 types. That good. Among them, first is supervised, good, unsupervised, and third is reinforcement learning. ओके, हाँ, अनसुपर सेमी इन्फोर्समेंट ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं. व्हाट एग्जैक्टली द 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग? पहला होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, और तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ओके, देयर विल बी द 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. वहां पे 3 टाइप का मशीन लर्निंग होता है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट. ओके, तो व्हाट इज मीन बाय सुपरवाइज मशीन लर्निंग? इसे बोलेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग. यस प्लीज. लेबल डेटा सेट, यस राइट. जिसमें लेबल डेटा सेट यूज होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग. अगर मेरे इसमें कोई लेबल डेटा सेट यूज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग. लेबल डेटा सेट यूज होता है. तो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय लेबल डेटा सेट? लेबल डेटा सेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है फिर? यस गाइस, इंटरेक्ट. सो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय लेबल डेटा सेट? यस, लेबल डेटा सेट का मीनिंग क्या है? एट्रीब्यूट आर नोन, यस राइट. और एवरीवन ट्राई टू टॉक. जो भी डाउट्स होंगे आपके, आई विल क्लियर यू एंड विल हेल्प यू टू सॉर्ट इट आउट एवरीथिंग. And you also keep my name remember always that I have taught you about the machine learning. I'm Nakul Deshmukh from IBIS. Keep it in your mind. Yes. When machine is already trained using the grouping system and all, तो सबसे पहले सीधा सीधा आंसर मैं देता हूँ. What exactly mean by label data? Label data का मीनिंग क्या है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूँ, so let me just clarification on this. So what exactly thing we have to deal? Talking about machine learning की बात करूँ, अब डीप लर्निंग के लिए हमारे पास टाइम बचना चाहिए. सो टॉकिंग अबाउट द मशीन लर्निंग के 3 टाइप होते हैं. पहला होता है सुपरवाइज, दूसरा होता है अनसुपरवाइज, और तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूं, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट
Reinforcement learning. So what exactly we have to deal in this? What exactly we have to work out in this? देखिए, सुपरवाइज की अगर मैं बात करूं तो इट विल डील ऑन अ लेबल डेटा. अनसुपरवाइज की अगर मैं बात करूं तो इट विल डील ऑन अनलेबल डेटा. एंड रीइंफोर्समेंट की बात करूं तो इसमें कोई डेटा का इतना फर्क नहीं होता है, बट इट विल वर्क ऑन रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज. तो सुपरवाइज का मतलब हम लोग बोलते हैं लेबल डेटा. तो एग्जैक्टली लेबल डेटा यानी क्या? सीधा सीधा कंसेप्ट है. अगर मुझे पता है कि मैं क्या इंफॉर्मेशन मेरे एल्गोरिदम को दे रहा हूँ, आई नो, जैसे कि इस केस में हम लोगों को पता है कि मेरे जो कॉलम्स है, जो पहला कॉलम्स है उसकी वैल्यूज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, दूसरा कॉलम है उसकी वैल्यूज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये सब मुझे पता है. तो मैं उसे क्या बोलूंगा? मैं उसे बोलूंगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग. ओके, मैं उसे क्या बोलूंगा? उसे मैं बोलूंगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग. अगर मुझे पता है एग्जैक्टली कि मशीन लर्निंग, मुझे पता है एग्जैक्टली कि मैं क्या डेटा पास कर रहा हूँ, what the information I am going to pass over there, what the columns I am going to pass over there, तो मैं उसे बोलूंगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग. उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग. व्हाट इज मीन बाय, हाँ, और उसमें डेटा लेबल है. तो इसमें और एक कंसेप्ट आता है, व्हाट इज मीन बाय अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. सो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग जैसे सुपरवाइज है वैसे अनसुपरवाइज है. यहाँ पे लेबल डेटा होता है और वहां पे अनलेबल डेटा होता है. ओके, तो डिफरेंस क्या है लेबल डेटा और अनलेबल डेटा में? डिफरेंस क्या है? लेबल डेटा मतलब मुझे पता है कि मैं क्या डेटा यूज कर रहा हूँ, और अनलेबल डेटा मतलब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं क्या डेटा यूज कर रहा हूँ. तो मुझे नहीं पता का मतलब क्या है सर? तो ये एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट करेगा? तो देखिए, if I have an certain kinds of one data set which contain the three types of shape. एक डेटा सेट है जिसमें तीन टाइप के शेप्स हैं. एक राउंडेड काइंड ऑफ शेप है इस तरीके का, एक स्क्वायर टाइप ऑफ शेप है इस तरीके का, और एक ट्रायंगल टाइप का शेप है और डायमंड टाइप का शेप है. ओके, ये मेरे पास डेटा सेट है. लेकिन मैंने ऐसा कहीं पे डिफाइन करके नहीं रखा है कि इस टाइप के शेप्स को आप स्क्वायर बोलेंगे, इस टाइप के शेप को आप सर्कल बोलेंगे, इस टाइप के शेप को आप डायमंड बोलेंगे. मैंने यहाँ पे कहीं पे ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी कोई शेप को मैंने कोई लेबल नहीं दिया है. अगर इस टाइप के शेप्स को मुझे यहाँ पे क्लासिफाई करना है, इसे फिल्टर आउट करना है, तो मैं इसे पास कर दूंगा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को, जिसमें बेसिकली क्या होगा, वो उसे ऑटोमेटिकली बाय लुकिंग टुवर्ड्स इट्स फीचर, यार ये जो स्क्वायर है ये इस टाइप का स्क्वायर है, ये शेप दोनों का सेम मिल रहा है, तो सभी को वो क्या करेगा? एक शेप में डाल देगा. ओके, दूसरा शेप है उसे मैं दूसरी कैटेगरी में डाल दूंगा, तीसरा है तीसरी कैटेगरी में डाल दूंगा. अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके पास अलग अलग एल्गोरिदम्स है, तो अलग अलग एल्गोरिदम्स के थ्रू आप उसे वर्कआउट कर सकते हैं, यानी आप लोग अलग अलग शेप्स को भी डील कर सकते हैं. दैट इज एन एंटिटी वी कैन डील एज वेल, दैट इज एन एंटिटी वी कैन एग्जीक्यूट एज वेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस काइंड ऑफ डेटा सेट. तो यहाँ पे लेबल अनलेबल ये डेटा हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर मैं लेबल डेटा की बात करूं तो मुझे उसमें पता है कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट. अब मैं बात करता हूं व्हाट आर द डिफरेंट एल्गोरिथम्स गेटिंग, हाँ, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. अगेन इट विल इज क्लासिफाइड एज टू टाइप्स. यस, व्हाट दैट? यस गाइस, एनीवन नोस? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के दो टाइप होते हैं. आप कोई बताएगा? क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन? नो. यस, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, दैट्स राइट. ओके, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के दो टाइप होते हैं. एक होता है क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है रिग्रेशन. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. वन इज व्हाट? वन इज क्लासिफिकेशन and second is what? Regression. Okay, we have two type of machine learning algorithm. One is a classification and second is a regression. Supervised machine learning classified होता है दो टाइप में, classification and regression. Okay, we call it as an classification and regression. हाँ, unsupervised. Yes please. अनसुपरवाइज जैसे किसी ने तो भी अभी रिप्लाई किया था, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन की अगर बात करूं तो दैट विल बी कम्स अंडर अनसुपरवाइज. ओके, क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन, सॉरी, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन की बात करूं तो ये आता है आपके अनसुपरवाइज के अंदर. ओके, रिग्रेशन.
और हाँ, this is the thing. So can you tell me what are the different algorithms will be comes under the regression? Regression के अंदर कौन से algorithm आते हैं? Yes guys, anyone? Regression के अंदर कौन? Linear and logistics. No, logistic is not a regression algorithm. Linear regression, polynomial regression, multiple regression will comes under a regression type. And when we are talking about the classification algorithm, Logistic regression. logistic regression will becomes under the Classification. classification. इसके अलावा और कुछ algorithm that you know? SVC support vector classifier. Yeah, we got it in SVM. SVC is the name of function. Decision Support tree is there. vector machine. Right. PNN is there. Random forest Random classifier. forest is there. Right. Neo-based Nearby. classifier. Yes, right. So these all are the different kinds of algorithm getting to work out. So these all algorithms are classification algorithm we call them. Okay. Then talking about the association, unsupervised machine learning में association कोई algorithm? Yes. A priori algorithm. A priori algorithm. Most probably we are looking for the a priori algorithm. In a priori there will be the, again different types. And when we are talking about the clustering, which is a famous one? Hierarchical DB scan. Hierarchical DB scan or K-mean clustering. K-mean clustering, right? So these are the K-mean, different types of yes. algorithms that we can go for. What we can go for the classification, yeah, gradient boosting. These all algorithms will become under the different entities. So basically what I want to do, अब मैं इसके execution के depth में नहीं जाऊंगा because we don't have that much of time to explain you. तो मुझे अब यहाँ पे कोई भी एक algorithm को apply करना है. So I want to classify. Should I implement here classification algorithm or regression algorithm? मैं मेरा जो problem statement है, this is prediction का, उसमें मैं classification apply करूँगा या regression apply करूँगा? What should I apply? Yes, guys? Classification. Because I want to just classify the disease into certain categories. Regression के लिए भी हम लोग workout कर सकते हैं. Is it possible? We need to transform the values. We Normalize need to the data. transform those value, normalize the value. That's right. So how we can deal with this now? I want to go for the any classification algorithm. Let's say I want to go for decision tree algorithm right now. मुझे यहाँ पे DT को implement करना है. You can change it to the anything. आपको अलग कोई भी algorithm के लिए अगर जाना है तो आप लोग जा सकते हैं. But I want to apply here what? A decision tree algorithm. So I don't know what the line I just need to apply or what the function I to execute. So what I am going to do here? I am just coming here the decision tree. I know or not remember exactly the what is the function name. कुछ तो भी decision tree नाम का function होता है, but exactly what I need to import the packages for that coming. Let me tell you one more entity. If you want to go for the execution of these entities as well, you can go for R programming language as well. Okay, so I also deal with that programming language. I work out with that as well, but मैं अभी उस पे नहीं जाऊंगा. सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसी ही है जैसे पाइथन में वर्कआउट करते हैं, थोड़ा बहुत सिंटैक्टिकल चेंज और बाकी चीजें वहां पे हैं. मोस्ट प्रोबेबली लैंग्वेज का पर्पस होता है डेटा एनालिसिस के लिए. तो मेडिकल इंडस्ट्री में मुझे अगर और आगे इन फ्यूचर एनालिसिस के लिए जाना है, हाउ मेनी पेशेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज विल बी सीन आफ्टर दिस ईयर एंड दैट ईयर, वी कैन गो फॉर इट्स एग्जीक्यूशंस एज वेल. चलो, rather than wasting the time, we just want to train our model. We just want to create a model of decision tree. So how we can create a model of decision tree? अब इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैं टेक्निकली वो अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, बट विल गो फॉर द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस. किसके लिए मुझे कौन सा क्लास यूज करना है, कौन सी चीजें यूज करनी है. इट डिपेंड्स ऑन द सिंपल काइंड ऑफ मूविंग ऑफ द डिसीजन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड. वी कॉल इट एन डिसीजन ट्री. जैसे कि एक ओवरव्यू देता हूँ. There are the different types of nodes. We need to identify which one is the best node to work out for me, and we just make certain kinds of decision based on the childs and parents. So अगर मुझे इसे implement करना है तो what the class I need to work out with this, what the class I need to import to this. So let me tell you. देखते हैं. और at the bottom it is given decision tree. I need to use the decision tree classifier
is a class from sklearn libraries. We need to import it from the sklearn libraries, and it's going to be called this decision tree. यहाँ पे criteria आपको रखना है, रखिए, नहीं रखना है, doesn't matter. So I do with the simple execution. I remove this random state and all. Just make it as a decision tree. So let me run it and check it whether everything will be okay, or will it ask for me for the next execution from sklearn.tree import decision tree. So let's see and let's check. हाँ, प्रेडिक्शन में कुछ एरर आ सकते हैं आगे, क्योंकि मैंने उसमें वन हॉट एनकोडिंग अब तक अप्लाई नहीं किया है. तो लेट नो हाउ वी कैन गो फॉर दैट एज वेल, बिकॉज वी नीड टू चेंज द वैल्यूज. हाँ, अब ये होने के बाद व्हाट आई वांट टू डील विद द नेक्स्ट एंटिटी. नाउ आई वांट टू ट्रेन माय मॉडल. यहाँ पे तो हम लोगों ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लोड किया है. आई वांट टू ट्रेन दिस मॉडल. सो हाउ वी कैन ट्रेन द मॉडल? आई जस्ट चेंज द नेम टू द dt. सो dt डॉट फिट नाम का फंक्शन यूज होता है, ओके, विच इज यूज टू वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन. हियर व्हाट आई नीड टू पास. अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोड इज ऑलरेडी गिवन इनटू द गूगल, जस्ट वी नीड टू अप्लाई दैट वन. एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एंड वाई अंडरस्कोर ट्रेन. उसका कहना है कि आप इसे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन के साथ वर्कआउट कीजिए एंड जस्ट ट्रेन द मॉडल. ओके, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मे बी हमारा मॉडल प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम नहीं है. मैंने गलती यहाँ पे की है, जस्ट रिमूव दैट वन. हाँ, सो लेट्स रन इट एंड चेक इट. Is everything will be okay? Yeah, everything will be okay. Then I want to go for the prediction. How I can go for the prediction? So और classification we can say, हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है. dt dot, I just call the function predict. Within that I want to predict on x underscore test. You can predict on x underscore test. You want to predict on x underscore, sorry, y underscore test. You can predict on y underscore test as well. Okay, तो मैं x underscore test से predict कर रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा x है. इनपुट पैरामीटर सेम होने चाहिए. वी गॉट समथिंग, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ y underscore predict को. सी विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली आई डिड. हर लाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा कि हर लाइन में क्या वर्कआउट हो रहा है, कैसे वर्कआउट हो रहा है. सो लेट मी शो यू. या सो इसका मीनिंग क्या है देखिए. व्हाट एग्जैक्टली आई डिड हियर, आई जस्ट वर्कआउट सिंपल से लाइन में मैंने मशीन लर्निंग को यहाँ पे वर्कआउट किया है. मैंने जो मॉडल ट्रेन किया है उसे मैंने इनपुट क्या पास किया पहले वो देखते हैं. मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ what exactly input is input, and it is going to be workout here. Print of this outcome output. तो machine learning model मेरा किस तरीके से काम करेगा, how it will be predict the entities to me, how it will be workout. So let me show you. तो देखिए, जब मैंने पहला रिकॉर्ड पास किया ये वाला, उसमें मैंने बोला है कि पर्टिकुलर पेशेंट जो है उसे इचिंग का प्रॉब्लम है, नोडल स्किन इरप्शन नहीं है, उसे रेस्टलेसनेस भी नहीं है, स्वेटिंग भी नहीं है. सो प्रेडिक्टेड डिसीज इज एक्जिमा. सेकेंड केस मेरे पास आई जिसमें कुछ भी नहीं है, बट इट वाज जस्ट प्रेडिक्ट सम काइंड ऑफ एक्ने. थर्ड केस मेरे पास आई जिसमें उसने अगेन एक्जिमा प्रेडिक्ट किया है. फोर्थ केस मेरे पास आई जिसमें मैंने और कुछ पैरामीटर एक्ने प्रेडिक्ट किया है. अगेन आई केम अक्रॉस एक्जिमा. ऑन दिस रिकॉर्ड 0 1 2 3 4 5 6 6 नंबर का जो रिकॉर्ड है वो प्रेडिक्ट कर रहा है अगेन एक्जिमा, एक्ने, and one more is predicting by looking to the last record, that is a skin rashes. Okay, तो टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है देखिए, what the way it just going to be deal, what the way it just going to be execute. Here I load or created the model only. मैंने इस केस में सिर्फ मॉडल को क्रिएट किया है. ओके, स्टेप्स कैसे फॉलो किए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कलेक्ट द डेटा सेट. You can collect the data set from the Kaggle, you can make it by your own, and you can execute. उसे वर्कआउट करने के बाद I just load the data set by using simple entity, that is a pandas. df is equals to pd dot read underscore csv right now. उसमें मैंने मेरी csv फाइल का पाथ पास किया है. I just pass the path over there. After passing the path, I am getting the complete things into the rows and columns. फिर उसमें से मुझे x और y को डिटरमाइन करना था. What exactly my x is, मेरा x क्या है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके बेसिस पे मुझे प्रेडिक्शन करना है. What exactly my y is, जो प्रेडिक्ट करना है वो है. ओके, बोथ एंटिटीज आर लाइक टू बी
that. Okay. Then I want to split the data set into the training and testing. So I use x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test for this, and train underscore test underscore split. इसके लिए ताकि वो डेटा सेट को स्प्लिट कर दे into the training and testing x and y. 20% डेटा सेट मैंने रखा है for the testing and 80% डेटा सेट मैंने रखा है for the training. So these things I did. Then I came across the decision tree classifier. I just apply the decision tree classifier over here. मैंने decision tree को यहाँ पे वर्कआउट किया. I call this algorithm for the execution. Use the variable dt. Then I write down dt dot fit x underscore 10 y underscore 10. इसे क्या किया मैंने? What I did here, यहाँ पे मैंने उसे ट्रेन किया है. I just train my model. मैंने मॉडल को ट्रेन किया है. ओके. फिर I just came across the prediction जिसमें मैंने यहाँ से predict किया है. So that the way I am just going to be, that the way I just going to execute. यानी x underscore test में अब पास क्या होगा? What I exactly pass? ये जो बच्चे कुछ रिकॉर्ड है ना ट्रेनिंग के बाद, that I just pass here, ये रिकॉर्ड्स पास होंगे. अब यहाँ पे काउंट थोड़ा ज्यादा है. ओके, डिपेंड्स. ओके, सो दिस रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी पास फ्रॉम हियर. ये रिकॉर्ड यहाँ से पास होंगे. दिस रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी पास फ्रॉम हियर and then going to be worked out. Okay, so these are the entities we have to deal. These are the entities we have to execute when we are talking about the execution of machine learning. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? What I did here, मैंने यहाँ पे simply symptom based execution किया है, in which I am just going to work out with a simple entity. I am just work out with a simple way of execution. I just work out for the prediction on the basis of symptoms. Symptom के basis पे मैं disease को predict करता हूँ. On the basis of symptoms, I am just going to predict a disease, guys. Okay, so try it at your end. Work out with this. कुछ questions होंगे इसमें आपके, तो you can free to ask me anything that you are not understood here, और कुछ ऐसी चीजें जो नहीं समझी है. So please let me know anything into your mind. Still execute it first. Workout कीजिए, execute कीजिए. We'll give the 10 minutes of time for its execution and execute it what exactly I did. Thanks a lot. Thank you, Suhasini madam. Just execute fast. 10 मिनट का टाइम आपको मैं देता हूँ. If you haven't facing any issues into the execution, so we'll explain that as well. So execute it fast, work out with this fast. Yeah, that's a good question. Is it necessary to split the data set into 20 into ratio for the testing and training data set? So let me tell you, recommended is 25%. जितना ज्यादा पार्ट आप टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे ना, उतनी आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप होते जाएंगी. ओके, सो रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे टेस्टिंग साइज के लिए रेडी. ये सीधा सीधा वैसा ही है जैसे कि अगर आप किसी के लिए डिश बना रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग द एनी डिश फॉर द एनी गेस्ट, और उसमें से अगर आपने कुछ तो भी एक डिश बनाई और उसमें से आधा पार्ट आपने खुद टेस्ट कर लिया, तो मेहमानों के लिए बचेगा क्या? यानी ट्रेनिंग के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, राइट? सो इट्स लाइक टू बी दैट. सो इट्स रिकमेंडेड दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा 25% तक ही टेस्टिंग डेटा सेट यूज कीजिए, उसके ऊपर यूज मत कीजिए. आप 50-50 भी कर सकते हो, डजेंट मैटर. आप 20-80, 80-20, उसके बाद आप 50-50, 60-40 ऐसा भी कर सकते हो. इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट जो रिकमेंडेड है फॉर द गुड एक्यूरेसी इज दैट वन दैट आई एम टेलिंग यू. क्लियर द क्वेश्चन? या, थैंक्स.
Anything else into your mind? Anyone? Free to ask the questions. We'll answer you for that. You may came across the practical execution of these each and everything. आगे अगर आपको algorithm change करना है तो बस यहाँ पे आपको minute change करना है. You can change it. तो मैंने ये basic programs लिए हैं, but things are more advanced apart from this. Okay, so that the thing you just have to deal into this one. Thanks, Om. Thanks a lot. Be in touch with the IBIS. Many more sessions we will get like this as well. Dear participants, we are at the end of our session, last session of last day. Do you have any queries or any type of subject you want to discuss? Our experts are available. You can ask your queries. Yeah, I will share my details at the end. Okay, how to identify the ML algorithm best suitable for the data set? So see, it's not possible to directly identify the algorithm bestly suited for the any data set. What you have to do, you have to do I will ask the first question, that is how you can identify the best algorithm for the data set. What you have to do in that case, you have to work out with the different data set. First, I will take data set and implement the 3 algorithms on that. Okay, I will take one data set, apply 3 algorithms, determine the accuracy and how the accuracy we have. Accuracy क्या होती है देखिए, उसकी accuracy होती है डिपेंड होता है एफ मेजर प्रिसीजन रिकॉल पे. यू माइट बी हर्ड अबाउट दिस पैरामीटर. सो अगर आपको एफ मेजर निकालना है, प्रिसीजन निकालना है, रिकॉल निकालना है, तो यू कैन डिटरमाइन दैट वन. तो मुझे अगर मेरे इस डेटा सेट के लिए कौन सा एल्गोरिथम बेस्टली सुटेबल है, ये अगर मुझे डिटरमाइन करना है, तो यू कैन गो फॉर द वन एंटिटी. आप लोग उसे किस तरीके से डील करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, सिंपल तरीके से आप उसे डील करेंगे. आप पहले पूरे एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करेंगे और हर किसी की एक्यूरेसी निकालेंगे. सो दिस एल्गोरिथम की एक्यूरेसी बेस्ट आती है if you are getting the one algorithm which have an best accuracy which is suitable for the data set. Without practical execution, orally we can't say कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ये डेटा सेट बेस्ट है. इट्स डिपेंड्स ऑन यू. ये आप लोगों पे डिपेंड होता है कि वो प्रैक्टिकली जब हम लोग डेटा सेट ट्रेन करेंगे, बिकॉज सी एक्यूरेसी इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन टू द एल्गोरिथम, इट आल्सो डिपेंड ऑन टू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा सेट्स एज वेल. आपके रिकॉर्ड्स में, डेटा सेट में बहुत सारी नल वैल्यूज अगर मुझे मिल रही है तो वो एक प्रॉब्लम है. रिपीटेड वैल्यूज मिल रही है, इट अगेन ड्रॉप द एक्यूरेसी. इन सम केसेस, मैं जब कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो इन सम केसेस आई विल गेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ 100%, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड समटाइम, बट कभी कभी मिल जाती है. तो दैट केस व्हाट हैपेंड, आई एम जस्ट कम्स टू नो अबाउट द डेटा सेट, द डेटा सेट वाज वेरी क्लीन एंड नीट. तो उस पे भी आपकी एक्यूरेसी डिपेंड होती है. इट्स अ टू वे एंटिटी, बिकॉज इनपुट जितना आपका प्रॉपर होगा, आउटपुट उतना ही आपका बेस्ट होगा. So it's the best entity that you can use. That is the thing. So one more question. How much accuracy the ML algorithm provide? Maximum accuracy आपकी 100% होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं. लेकिन 100% भी accuracy it's not a too good. कहीं पे आपको 100% accuracy मिलेंगी, but don't treat it as an 100%. You can consider as a 99.8 and like that one. Okay, that's the thing. Any more question you would like to ask, guys, apart from this? Yes, please. You can keep me posted in chat. Okay. So these are the things we are did. कुछ थोड़ा सा, yeah. Let me share you my contact details with you. You guys can reach out me. Thanks a lot, Mr. Anish. So myself, Nakul Deshmukh. My organization name is IBIS Technologies. I'm located in 3 locations. We are in Pune, we are in Amravati as well as in Nagpur.
at the three locations we have, and 9404689440. This is my contact number. You may reach out on this number, and my mail ID is nakul@ibsctro com. This is my mail ID and my office number. If you I am unable to pick up you at any time, this is our office number. You can just ping me on WhatsApp also if you have any kind of requirement. IBS is conducting such a kind of training session across the different colleges. Let me show you exactly what we people did till right now. You can follow us on Instagram as well as Facebook, and let me show you the tutorials that are available on our YouTube channel, मैं youtube.com. अभी नहीं आ सकती हूँ। So here you can just check out our channel as well. Okay, so you can save my number. ऐसे कुछ सेशंस रहे तो आपको स्टेटस में वो मिल जाएंगे. This is exactly what people are doing. So these are some recent activities that we are already did. Basically, ये कुछ outputs है जो students ने last time बनाए थे. Organization is working on the different platforms like Android, IoT, machine learning, data science, generative AI, R programming language as well. Like that of the things we are did. So these are the entities we have worked. But from that, we are also conducted many more sessions. इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको एक चैनल पे हमारे रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे. वन ईयर यहाँ अभी पे कुछ भी नहीं करती हूँ, अभी you will मेरा get. एंकरिंग है तो Can you please mute yourself now? हाँ, तो here you can just check out the videos. Okay, the videos are given. These are some React videos are also there. You can get the machine learning as well. You comes to know about the Python as well over there. You comes to know about the Android as well. So our videos are listed. Okay, so link list, data structure, these all entities. Okay, so आप इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं. You can keep my details with you. If you have any requirement regarding to this, you can reach out to us. And my organization is definitely looking forward to help the institution, those who want to really deliver a practical knowledge to the students. We reach out always with the practical sessions. We have a good exposure in Pune as well as in Mumbai as well as in Nagpur, Amravati, all over the Maharashtra we are working. And right now the organization is trying spreading out of the Maharashtra as well. Okay, so anything, keep me posted about this. So thank you so much, guys, listening me carefully. I deep learning the part I was unable to cover due to some time restriction, and I have scheduled some meetings as well later. So extremely sorry for that. We hope we meet back in some next sessions as well. Okay, I really thankful for your kind feedbacks also. So thanks a lot, guys. Just be in touch with the IBIS. thank you, sir, for sharing your expertise with us. Your lecture was highly informative and helpful. It was incredibly enlightening. Our participants are seem to be really excited and satisfied with this session. Thank you very much, sir.